Hello friend, here Satish Tayakar. In last lecture, we discussed about simple cubic cell, its density of simple cubic cell. So packing efficiency of simple cubic cell was 52.4%. Now in this lecture, we will discuss about again density of next unit cell, and it is body center unit cell. As you can observe in this diagram, body center cubic cell, here total number of atoms present in this unit cell. Actually this is unit cell of body center cubic cell, and this in this unit cell total number of atom I want to calculate. So total number of atom in this unit cell is equal to, so at each corner here total 8 atoms are present. So each atom contribute 1/8 part of this atom in this unit cell. So simply if we consider 1/8 part of each atom, here total 8 atoms are present at each corner. We simply here 1 upon 8 into 8, it become equal to 1, and plus 1. We simply in this unit cell, inside this unit cell total 1 atom is present, whole 1 sphere is present. We simply it contribute total 1 atom, means that plus 1. Now it equal to become 2, means we can say that in body center unit cell total number of atoms are equal to 2, means here total 2 atoms are accommodated in this unit cell. नाउ नेक्स्ट हमारी यहाँ पे कोशिश रहेगी कि यहाँ पे इस टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट करें. सो टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल, I must know the value of this side. If we know the value of this side, then we can easily calculate the value of volume of this unit cell. We simply to calculate this A value, here we must follow the following process. So in this diagram we can consider here triangle ACB. Triangle ACB, here that B is a diagonal of this length AB, and in another triangle ABD, here C is the diagonal of length AD. Means here there are two triangles. Now to calculate this side A, here we have to consider first triangle ACB and next triangle ADB. Now in triangle ACB, that side square, simply this BC square and this AC square become equal to B square, that means AB square, according to Pythagoras theorem. Simply that Pythagoras theorem show AB square is equal to BC square plus AC square. So this side AB square is equal to BC square plus AC square. So simply we can consider here BC is equal to A and AC is equal to A. So we get A square plus A square, it is equal to twice A square. So AB is nothing but this side AB is nothing but the B. So simply B square is equal to twice A square. So we got this one, B square is equal to twice A square. Now in triangle, second triangle, that is triangle ABD. In this triangle, if you want to calculate the value of this C, that means according to Pythagoras theorem, here this side becomes equal to the side square, that means B square plus this A square. This is nothing but this side and these sides are equal. So we will get AD square is equal to AB square plus BD square. So what is value of AB? As we explained earlier, AB value is simply B square value. It is nothing but the twice A square, and this value is nothing but the A square. So A square. So we get AD square is equal to twice A square plus A square. Now after calculating here thrice A square, that is value of AD square. Now what is the AD here? It is a diagonal C of length A. So simply AD C square is equal to thrice A square. Now this is the value of C square. I want to calculate the value of C. So simply it become equal to C is equal to under root 3 into A.
This is value of C, and I am trying to show here same this diagram another way here like this. Suppose one unit cell and each contain one sphere inside whole sphere, and at each corner one sphere which contribute 8 parts. So here 1/8 part of one atom at one corner and another 1/8 part of one corner. So if we consider this line, so simply here this sign show total value is equal to, so radius of one sphere, that is r, radius of this one whole sphere, so simply it become r, that means plus twice r, and radius of this r is simply this sphere, that is r, so total become 4r. So this side, that means c square, this side become equal to 4r. So simply we can consider here 4r is nothing but the c. So if we get the value of c is equal to 4r, then we can compare this value c is equal to 4r with this c value is equal to under root 3a. So simply after putting this value here, we get 4r is equal to under root 3 into a. So I want to calculate the value of a, side a. So we get equation a is equal to 4r upon under root 3. So to calculate the volume of this unit cell, we must take the cube of a, side a, and it equal to 4r upon under root 3 cube. Now after calculating, we get 4 cube, that is 64, and into r cube divide by under root 3 cube means simply 3 into under root 3. So it is the value of volume of unit cell. So this is volume of unit cell. Now I got the volume of this total unit cell. Now I want calculate the total number of atom present in this unit cell. So I know that total number of atom is equal to 2. So 2 atom in this unit cell, हाउ मच पार्ट इज़ ऑक्यूपाई बाय दिस 2 एटम. तो मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, ये टोटल यूनिट सेल के अंदर ये 2 एटम ने टोटल कितना पार्ट ऑक्यूपाई किया है. तो इसी को हम यहाँ पे डेंसिटी कहते हैं, उसी को हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं. तो बात करते हैं हम यहाँ पे, अगर ये टोटल यूनिट सेल हुआ 100%, तो मैं कंसिडर करूँगा यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना है V. तो ये हुआ टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम. तो सिंपल बात करते ये होगा 64 इंटू आर क्यू अपॉन D3 अंडर रूट 3. It is 100%. Simply we can consider here 64 into r cube upon 3 into under root 3. if it become 100%, इसका मतलब क्या है, अगर ये वॉल्यूम ये पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम है, तो मुझे इसके अंदर जो एटम प्रेजेंट है वो वॉल्यूम कितने परसेंट है वो कैलकुलेट करना है. तो कितना परसेंट ऑफ एटम इन्होंने यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है. टोटल स्पेस दिया है 64 आर क्यूब अपॉन 3 इंटू अंडर रूट 3. इसमें से कितना पार्ट इन एटम ने ऑक्यूपाई किया है, तो ये मुझे कैलकुलेट करना है. तो टोटल एटम कितने प्रेजेंट है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम 2, और एक एटम का यानी एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. सो 4/3 पाई आर क्यूब, इट इज़ वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट. सो आई वांट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2 यूनिट. सो इट बिकम इक्वल टू, सो वॉल्यूम ऑफ दैट 2 unit is equal to 2 into 4, and that become equal to 8/3 pi r cube. Now this is the value of 2 unit or 2 atom present in that unit cell. Now if total volume of unit cell is equal to this much, that means it is 100%. So this value of atom show how much percentage. Simply we can consider here 64 into r cube upon 3 into under root 3. This is the whole volume, total volume of unit cell. अगर हम इससे 100% कंसिडर करते हैं, ये पूरे सेल का वॉल्यूम हुआ 100%, तो उसमें से एटम कितना प्रेजेंट है 8/3 पाई आर क्यूब. तो ये कितना परसेंट हुआ, तो मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ x%. समझ में आ रहा है. तो ये 64 आर क्यूब अपॉन 3 इंटू अंडर रूट 3, ये हुआ
100% यूनिट सेल। तो इसमें से एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, दिस मच वॉल्यूम, 8/3πr³। तो मुझे अगर कैलकुलेट करना है इनका परसेंटेज कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, तो मैं यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे जो कोई इक्वेशन मिलने वाला है वो इक्वेशन कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ वही वैल्यू मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में मुझे मिलने वाला है सिंपली x इंटू 64r³ इंटू √3 into 100 upon this much value. Simply here we will get 64r³ upon 3 into √3 into x is equal to 8/3πr³। मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे x की। देखो यहाँ पे हमने कंसिडर किया था यहाँ पे दिस वैल्यू 64r³ upon 3 into √3, it is 100%, and this part 8/3πr³, it is x%. So after cross multiplication we get that 64r³ upon 3 into √3 multiplied by x is equal to 8/3πr³ multiplied by 100। तो यहाँ पे मुझे multiply by 100 लिखना होगा। Understand? So simply this is the value, and after getting the value of x, I want to calculate the value for x. How much percentage of atom is occupied? So it is equal to x%, and it is equal to, अभी मुझे x के लिए इक्वेशन बनाना है, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करने होंगे। तो 8πr³ एज इट इज़ रहेगा, 100% एज इट इज़ रहेगा। अभी सिर्फ मुझे ये वैल्यू इस साइड में लाना है और यहाँ पे देखना है नीचे क्या रहने वाला है। तो सिंपली 64r³ we have to divide 64r³ and here that should be multiply here 3 into √3, so we get this equation. So simply after calculating this equation, here we will get some this much of value where it show near about 68% value that is occupied by the atoms. Simply this much of value occupied by an atom, 2 atom ने इतनी जगह वहाँ पे ऑक्यूपाई किए। तो यहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी है एज़ कंपेयर टू लास्ट बॉडी सेंटर, दैट मीन्स सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है। यहाँ पे 68% है, वहाँ पे था आई थिंक 52.4%। सो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। जब हम बात करते हैं एम्प्टी स्पेस, देखो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया है दो एटम ने, 68। तो मुझे अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड, जो वहाँ पे आइटम प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा 100 माइनस 68 एंड इट विल बिकम 32। तो यहाँ पे 32% वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड रहेगा, वहाँ पे वो खाली जगह रहेगी। इसका मतलब वहाँ पे दिस मच ऑफ वाइड, 32% ऑफ वाइड इज प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर unit cell. So this one is about packing efficiency of body center unit cell. In next lecture we will discuss about packing efficiency of face center unit cell. So friend, just try to explain again in short. Here we are explaining density of unit cell related with body center unit cell. In body unit cell, here one total sphere is present inside the nucleus or inside that sphere, and at each corner there are 8 atoms and each atom contribute 1/8 part. So simply we can calculate total number of atom present in this unit cell, 1/8 into 8 plus 1, so it become equal to 2 atom. Means इस यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, 2। सो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस साइड ए, हियर वी अंडरगो सम observation in triangle ACB. Means in this triangle ACB, in this triangle according to Pythagoras theorem we can calculate the value
that AB square is equal to BC square plus AC square. So according to that, AB square is equal to BC square plus AC square. And what is value of BC? That BC is nothing but the A. AC is nothing but the A. So it become A square plus A square. It gives value is equal to twice A square. Simply that AB square is nothing but the AB square. It is diagonal of length AB. So we can write value B square is equal to twice A square. So we get the value of B square is equal to twice A square in this case. Now in another triangle, that is triangle ABD, means triangle ABD. Here again we can apply the Pythagoras theorem. In this theorem, here AD square is equal to BD square plus BA square. Now here according to that, AD square is equal to BD square plus AB square. So it become equal to, what is the value of this B? Earlier we explained here, B square is equal to twice A square. So that value B square means this square, that become equal to twice A square. And what is value of this BD? It is the A square. So we get AD square is equal to thrice A square. Now in this equation, AD square is nothing but the, what is the value of this AD square? What is the value? That is the C. Means simply here C square is equal to thrice A square. We can write that C is equal to under root 3A. Simply we can consider here under root 3A, it is value of C. And as we explain here that in this case here, it is a one sphere which is present at the corner, another sphere which is present at another corner diagonally, and this is a whole one sphere which is present inside this unit cell which is directly in contact with this corner. Simply after that we get radius of this sphere is equal to R, radius of this corner sphere is against R, and radius of this sphere it become equal to twice R. So it become equal to R plus twice R plus R. So it become 4R. So we get value of this C, means this value. मुझे इस साइड C की मीन्स साइड AD की वैल्यू मुझे मिली है 4R. तो मैं यहाँ पे C की वैल्यू यहाँ पे मैं कंपेयर कर सकता हूँ. यहाँ पे C मिला मुझे 4R, यहाँ पे मिला मुझे अंडर रूट 3A. सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस. 4R is equal to under root 3A. So I want to calculate the value of A that is side. A is equal to become 4R upon under root 3. So simply I want to calculate the value of volume, that means A cube, then it equal to, मुझे राइट साइड का क्यूब लेना होगा. तो सिंपली 4R upon under root 3 whole cube. So after calculating A cube means volume is equal to 64 R cube upon 3 into under root 3. It is the volume of टोटल यूनिट सेल. ये पूरे यूनिट सेल का, बॉडी सेंटर यूनिट सेल का वॉल्यूम हुआ, इट इज़ 64 R क्यूब अपॉन 3 इंटू अंडर रूट 3. अब बात करते हैं हम यहाँ पे टोटल आइटम कितने प्रेजेंट है. टोटल आइटम से यहाँ पे 2 आइटम. तो ये 2 आइटम ने यहाँ पे इस यूनिट सेल में कितना परसेंटेज पार्ट ऑक्यूपाई किया है, यहाँ पे कितना वॉल्यूम इन्होंने ऑक्यूपाई किया है. तो सिंपल सी बात है, अगर टोटल वॉल्यूम 100% होगा, यहाँ पे ये हुआ टोटल वॉल्यूम, अगर ये टोटल वॉल्यूम 100% हुआ तो एटम ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा वो मुझे x% लेना होगा सिंपली. तो यहाँ पे टोटल आइटम कितने प्रेजेंट है, 2 आइटम्स. एक एटम यानी एक स्पेयर का एरिया और सिंपली वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब. एक स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब. तो 2 स्पेयर का वॉल्यूम कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब. सो इट विल बिकम 8/3 पाई आर क्यूब. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स. 2 एटम्स, 2 एटम्स ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है. अभी मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ये 2 एटम ने टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में कितना परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है. तो टोटल यूनिट सेल कितना हुआ 100%, दैट मीन्स दिस मच. तो 2 एटम का वॉल्यूम कितना होगा
x%, तो यहाँ पे होगा x%। तो मुझे यही कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैं करूँगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट दिस इक्वेशन 64r³ अपॉन 3 इंटू √3 इंटू x इज इक्वल टू 8/3 πr³ मल्टीप्लाई बाय 100। सो to calculate the value of x, it become equation x is equal to 8 pi r³ into 100 into 3 into √3 upon 64 r³, and after calculating this equation we get the value is equal to 68%. this much of percent volume occupied by two atom, दो एटम ने 68% ऑफ दैट यूनिट सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। तो ये हुआ उसने ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम। तो मुझे अभी निकलना है अनऑक्यूपाइड, जो उन्होंने ऑक्यूपाई नहीं किया है, कितनी एम्प्टी स्पेस वहाँ पे प्रेजेंट है। तो मुझे ये ऑक्यूपाइड किया हुआ जो वॉल्यूम है वो मुझे 100 से निकालना होगा। इट बिकम 100 माइनस 68%, सो इट विल बिकम 32% वाइड। वाइड मीन्स एम्प्टी स्पेस इज प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल। सो दिस इज अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल। थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे शेयर करना या लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर यूनिट सेल। थैंक यू।